देन वी हैव सीबीटी फॉर कपल्स एंड फैमिलीज, ठीक है। Couples therapy, DBT, focuses on improving communication, reducing conflicts, and fostering emotional intimacy. ठीक है. So the therapy emphasizes कि again जैसे हमने बोला कि mindfulness, distress tolerance, emotional regulation, and interpersonal effectiveness. ठीक है. I think we have already gone through this. And कोई भी problem है तो ये आपके पास already है PPT. So these skills, they aim to break the negative thought pattern, reduce the criticism, and defensiveness, and enhance the intimacy between the people. Because हम इसमें emotional लिए हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, interpersonal relationships भी better हो रहे हैं, ठीक है. To cope with problems also is in a better form here, ठीक है. For instance, the DBT Skills for Couples program provides strategies to cope with the intense emotional patterns, ठीक है, and disagreements also. So fostering to a healthier relationships. So yes. Then इसमें आता है कि हम कैसे DBT for families के लिए करते हैं. When applied to family therapy, DBT addresses the relational dynamics, ठीक है, and emotional dysregulation within the family unit. ठीक है, तो पहले वो relational dynamics को देखते हैं, फिर वो emotional dysregulation with the family unit देखते हैं, जहाँ पे वो focus करते हैं नंबर 1 on validation. ठीक है, कितना हम दूसरे इंसान के इमोशंस को वैलिडेट कर रहे हैं. दूसरी चीज बिहेवियरल एनालिसिस, जहां पर आइडेंटिफाइंग, मॉडिफाइंग maladaptive behavior within the family system. Then we have problem solving, where developing collaborative solutions to family challenges जो भी होते हैं, ठीक है. Then research indicates that DBT can effectively treat emotional dysregulation in couples, leading to improved marital satisfaction. A study involves 20 couple with marital distress found that DBT significantly reduced difficulties in emotional regulation and enhanced dyadic adjustments. ठीक है. ओके, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. बेनिफिट्स ऑफ डीबीटी फॉर कपल्स एंड फैमिलीज. नंबर 1 ऑफ कोर्स इज enhanced communication. Then we have reduced conflicts, because अगर आप communicate अच्छे से करोगे तो conflicts क्यों होंगे. Then we have increased emotional intimacy also, ठीक है. And then we have improved problem solving. Simple as that. All right. बस. In summary, DBT offers a comprehensive framework for couples and families to develop essential skills, ठीक है, for managing emotions, enhancing communications, and building a healthier relationship. By focusing on mindfulness, again, be very specific on these things. कैसे हम कर रहे हैं? Mindfulness के थ्रू, इमोशनल रेगुलेशन के थ्रू, healthier relationships को build करने के थ्रू, by focusing on these things, interpersonal effectiveness also. DBT provides tools to navigate the relational challenges. जो भी वो dynamics में problems है उसको सुधारने के लिए and promote emotional well-being. Again, everything in DBT boils down to the emotional regulation. Because हमारे क्या होता है कि emotions ही होते हैं जो आधा time it takes over us. You know, it takes over us and in a negative way, जहाँ पे emotions हम लोग को control कर रहे हैं, whereas we have to control the emotions. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को emotionally regulate होना बहुत जरूरी होता है. All right. Then disorders and DBT. ठीक है, DBT is an evidence based psychotherapy. ठीक है, तो कैसे कैसे different disorders में हम DBT का इस्तेमाल कर सकते हैं. And yes.